investment policy where 5 anchor units in Pune, Nasik, Nagpur, Ahmednagar and Aurangabad will be set up. We have also unveiled our e-vehicle manufacturing policy, which will be more important towards clean transportation, especially into public transport. The fourth idea is about increasing the public infrastructure. Honorable Prime Minister is coming from foundation stone laying ceremony of New Mumbai Airport, and there are many marquee projects, but I would like to highlight only two things. The Deutsche Bank report recently published has put Maharashtra at number 1 in infrastructure investment, and the report says that the investments into infrastructure, which are more than 30 million, 51% investment on such big project is going on in the state of Maharashtra, and put together $20 billion worth infrastructure projects are being carried out in the state of Maharashtra. The Niti Aayog has also put Maharashtra into on number 1 in infrastructure investment, and I think that infrastructure-led growth is key to creating jobs and achieving the trillion-dollar economy. And the fifth and final idea is to create growth corridors to connect Mumbai metropolitan region and the JNPT to the unconnected areas of state, the unlocked potential of underdeveloped lands and value-added agriculture to be captured through various policies, and for that we are creating Maharashtra Samruddhi Corridor, which will be a 700 kilometers expressway, the longest ever built in the country. It will connect 14 districts of Maharashtra and integrate 24 districts of Maharashtra to the JNPT port, and I think the port-led development concept floated by our Honorable Prime Minister will be unlocking the entire hinterland for business development. With GST, logistics is also a very big business. We have unveiled our logistic policy, and we are trying to create 25 integrated multimodal logistic hubs, 100 logistic parks, and we have given many concessions for that. Textile parks, MSME clusters are also some ideas through which I think we can achieve this stature of a trillion-dollar economy. At the end, I would like to tell Honorable Prime Minister, I would like to assure Honorable Prime Minister from the state of Maharashtra that your vision of New India with Sabka Saath Sabka Vikas, Maharashtra would be the trusted partner of the central government in achieving the $5 trillion economy and to achieve the dream of New India. I once again thank all the business captains who are sitting on the dais, who are sitting off the dais, and I am very thankful to all of them for sparing time and participating. Let us participate and do the best for our country. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Honorable dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, we will now play for you an audiovisual that showcases magnetic Maharashtra. मैं महाराष्ट्र हूँ। अति प्राचीन काल से मेरा नाम श्रद्धा और विस्मय का आह्वान करता है। मैं धातु और ईंट से बना था। मैंने सेनाओं के विनाश का और समय का सामना भी किया। आज मैं गर्व से खड़ा हूं। अवसरों का स्वागत करते हुए, एक चुंबक जैसे व्यवसायों को आकर्षित करते हुए और मुझे चुंबकीय बनाने में हाथ है उन संभावनाओं का जो मैं प्रदान करता हूं। मैं भारत का सबसे औद्योगिक राज्य हूं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए
सबसे ज्यादा योगदान मैं ही करता हूं। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग मुझे पड़ोसी राज्यों के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। साथ ही साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू हवाई अड्डे। मेरे पास आसान माल ढुलाई के लिए बंदरगाहों और रेलवे की विस्तृत विविधता है और बुनियादी ढांचा तीव्र गति से विकसित हो रहा है। मैं 2020 तक 7 करोड़ रोजगार योग्य कर्मचारियों के साथ अत्यधिक कुशल और योग्य मानव शक्ति की उपस्थिति का दावा करता हूं। मेरे 6000 से अधिक संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 16 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। कई प्रगतिशील नीतियां व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देती हैं और तो और कई योजनाएं व्यवसाय करना आसान बना देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2016-17 में 29 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI आया है। इन सभी अफसरों ने लोगों में जबरदस्त आत्मविश्वास जगाया। जीतने को तैयार पड़े हैं। लोगों का मन शानदार, गुणवान और मेहनती हर किरदार। यहाँ राहें अपने आप खुल जाती हैं, विकास के साथ जुगलबंदी कराती है। हर पल नई कहानी लिखती है यहाँ की ऊर्जा। आगे बढ़ने को तैयार है यहाँ का पुरसा पुरसा। उन्नति का है सवेरा। मैग्नेटिक महाराष्ट्र ये मेरा। मैं महाराष्ट्र हूं। मैं आपको सह निर्माण के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वागत है मैग्नेटिक महाराष्ट्र में। सही मायनों में एक महान प्रदेश महाराष्ट्र। I now request Ms. Karen Broding, State Secretary to the Minister for Higher Education and Research, Sweden, to please address the gathering. We are delighted, Honourable Minister, with your presence this evening. Honorable Prime Minister Modi and Honorable Chief Minister Fadnavis, Excellencies, ladies and gentlemen, Namaste. It's an honor to participate in Maharashtra's first Global Investment Summit and Magnetic Maharashtra Convergence 2018. It's a special pleasure to be here, particularly at this momentous time in the relations between Sweden and India. In the past few years, we have seen an exponential exchange of high-level visits between our countries. It started with the first ever visit by your President to Sweden in 2015, and a visit by the Prime Minister of Sweden, Löfven, to make in India, also here in Mumbai 2 years ago. On that occasion, the Honourable Prime Minister Modi and Prime Minister Löfven agreed on a common roadmap. Since then, we've seen our partnership expand, deepen and widen to new areas. This past fall, Sweden hosted the first Make in India outside of India in Stockholm. The event was attended by 600 representatives from our both countries. We have also witnessed an increase in people-to-people contacts. Travelers, professionals, researchers and students. Being in charge of higher education and research, I hope we will see more student exchange over the times to come. Last year, 250,000 Indians visited Sweden.
With Air India's direct flight to Stockholm, we can expect increased exchange from all walks of life. Swedish companies have been working in India for over a century. The majority established during the 50s here in Maharashtra, due to the first official visit to India by the then Prime Minister Tage Erlander. 170 Swedish companies are in India, and they employ 185,000 directly and 1.3 million indirectly. In the last decades, we've seen companies like Scania Buses, IKEA, H&M, and startups coming to India. They have all invested in Maharashtra. We have a long history of collaboration, but we believe more can be done. Firstly, I believe that our shared common values are essentially, especially in relation to democracy and human rights. Secondly, there is a great sense of opportunity. Every year, and more Swedish companies are finding their way to India. Indian companies, in turn, have made major investments in my country. Thirdly, India is growing and changing fast. It has a young and dynamic and talented population. It is striving for a great economic transformation, and I would like to congratulate you, Prime Minister, on the progress made by India in the ease of doing business. Women's participation in the formal economy and labor force is key to achieving the full potential of the society, and is also a top priority for the Swedish government. I would therefore like to highlight a specific project called Kraftsamla, launched earlier today. The Swedish Consulate General and others, as well as the government of Maharashtra, are joining forces to improve gender equality and create a pool of skilled women from disadvantaged backgrounds in the Poon region. Finally, India and Sweden have shared concerns on how to combat the grand challenges of today. Honorable Prime Minister Modi, your country is an indispensable actor on issues of global importance. Thank you for your attention. Thank you, ma'am. I now request Mr. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director, Reliance Industries, to please address the gathering. Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji, Governor of Maharashtra, Cabinet Ministers from Centre and the State on the dais, my distinguished friends and colleagues from the industry, ladies and gentlemen. Welcome to Mumbai, my home city. Pradhan Mantri ji, your visionary leadership has initiated many historic changes in India. But your biggest achievement is in changing the mindset of all Indians. Your new India vision is inspiring all Indians to think big and achieve impossible goals. The best example is this magnetic Maharashtra summit itself. Under the youthful leadership of our Chief Minister Shri Devendra Fadnavis, Maharashtra, as he said, is aiming to become a $1 trillion economy before 2025. I have never seen such explosion of ambition in Maharashtra as I see today. Mananiya Devendra ji,
मी अभिमानाने सांगतो, महाराष्ट्र means महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र. Friends, I am proud that Mumbai is Reliance's Janmabhoomi and my own Karmabhoomi. Reliance was a startup established by my father Dhirubhai Ambani in this city of dreams, with only an initial capital of 1,000 rupees and 1 employee. Today, Reliance employs over 350,000 people, and it is the largest wealth creator for India. Reliance always invests in India's big dreams, in building businesses of the future with Indian talent and Indian youth. Mumbai is also home to Jio, our newest technology startup in the Reliance family. When our Prime Minister unveiled his Digital India vision, it became Jio's own mission. Before Jio's launch, India was 155th in the world in mobile data consumption. Today, India is number 1. Over 170 million Indians enjoy the highest quality data services at the lowest prices in the world from Jio in the last 12 to 18 months. We have so far invested 250,000 crores across India, of which our investment in Maharashtra is the highest at 22,000 crores. Within the next 2 years, Jio will connect every Gram Panchayat, every school, every college, and every hospital in Maharashtra to bring the benefits of the digital revolution to the last person in society. Friends, now Reliance is ready to take the Jio movement forward with an even more ambitious initiative. A proud new initiative for a new India and a new Maharashtra. It will make Maharashtra the birthplace and the cradle of the 4th industrial revolution in India. The 4th industrial revolution is a convergence of disruptive technologies in the physical, digital, and biological spheres. It is going to transform the world and our society in unimaginable ways. There is a global race to harness artificial intelligence, robotics, blockchain, Internet of Things, virtual and augmented reality technologies, life sciences, new materials, and new sources of energy and other technologies of the future. India cannot afford to lag behind in this race. Indeed, India has an opportunity based on its large market to be a global leader. The 4th industrial revolution will help Maharashtra and India solve the most difficult problems in our socio-economic development, in healthcare and education, in water security and environment security, in boosting agricultural production, in making all our towns and cities smart, and also our villages smart. Most importantly, the 4th industrial revolution will generate millions of new, attractive employment for the youth of Maharashtra and the youth of India. Therefore, today, I am happy to announce that Reliance will establish India's first ever integrated industrial area for the 4th industrial revolution in the state of Maharashtra. Reliance will invest with a coalition of global companies more than 60,000 crores over the next 10 years in this collaborative initiative. When we contacted global reputed technology companies to participate, we received an overwhelming response.
just within a few weeks, more than 20 global companies have already agreed to co-invest with Reliance. And these include Cisco, Siemens, Corning, HP, Dell, Nokia, and NVIDIA. I firmly believe that what China could achieve with its manufacturing revolution, India can achieve much more and much more quickly under the leadership of our Prime Minister in this new services-led digital fourth industrial revolution. I assure our respected Prime Minister and the Honorable Chief Minister that this mega project will make Maharashtra even more magnetic. Finally, I would like to say that Reliance stands fully committed to further strengthen its partnership with Mumbai and Maharashtra in the coming years. Jai Maharashtra, Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have amongst us a personality that has revolutionized the very meaning of business and investment the world over. Sir Richard Branson, founder, Virgin Group and chairman, Virgin Hyperloop One. Well, it's a great honour to be here today. The Honourable Prime Minister Modi, the Honourable Chief Minister Narendra, Fadnavis, ladies and gentlemen, I'm honoured to be here at this wonderful conference with our Virgin Hyperloop team to share some very exciting news for the future of transportation in India and for the wider world. The Indian state of Maharashtra has signed a framework agreement with the intent to build a Virgin Hyperloop between Pune and Mumbai, beginning with an operational demonstration track in the region. Now, just to let you know what this means, this first Hyperloop route will link central Pune with Mumbai and Navi Mumbai International Airport in around 15 to 20 minutes. How long does it take on the road? And it will connect 26 million people. Individual pods will go straight to individual gates at the airport, saving a further hour or so going through the airport. It will carry 150 million passengers per year, and it will help create a thriving, competitive mega region. As Virgin Hyperloop Chairman, I'm incredibly excited about the potential to truly transform not just transportation, but the wider society. Virgin Hyperloop One can help India become a global transportation pioneer, and it can forge a new world-changing industry. It can leapfrog existing transport systems, and it create the backbone of an infrastructure system fit for the 21st century. As our team studies have found, the Pune-Mumbai route will result in 55 billion US in socio-economic benefits. It'll reduce journey times massively, it'll reduce accidents, and it'll cut operational costs. We expect the high-capacity passenger and cargo Virgin Hyperloop system to create tens of thousands of jobs here, helping to attract new business and investment to the region. It'll be 100% electric. It'll be an efficient system which will also ease severe expressway congestion and will reduce greenhouse gas emissions by around 86,000 tons. Virgin Hyperloop is the only company in the world that has built a fully operational Hyperloop test system, soon capable of speeds up to 1,000 kilometers per hour. I became its chairman having visited in the Nevada desert outside Las Vegas. I was impressed by the wonderful team,
working hard to make Hyperloop a reality, and excited by the amazing potential of the system to change the world. I believe Virgin Hyperloop could have the same impact upon India in the 21st century as trains did in the 20th century. The Pune-Mumbai route is an ideal first corridor as part of a national Hyperloop network that could dramatically reduce travel times between most of India's major cities to under 2 hours. It will also help alleviate the misery of people sitting in traffic hour after hour after hour. At Virgin, we're always focused upon innovating in the present while pioneering into the future. As the brilliant teams of Virgin Trains, Virgin Atlantic, Virgin Australia and other companies around the Virgin Group continue to push their industries forward, we're equally excited by businesses such as Virgin Galactic, Virgin Orbit and Virgin Hyperloop breaking through further barriers in the coming years. Thank you for hosting us here. We look forward to working together to help transform India and Indian transport for good. It's an exciting day and a virgin birth today here in India. Thank you very much. Thank you, sir. We now request Mr. Edward Monser, President Emerson, to please address the gathering and share his thoughts with us on this occasion. Thank you very much. I have two sets of comments to make. The first regarding the U.S.-India Strategic Partnership Forum, and we want to commend the Prime Minister on his continued efforts on economic reform and ease of doing business. Your presence and message at Davos and statement on the benefits of globalization was very welcome by global industry. Thank you. We also want to once again thank you for Make in India. Thank you for Skills India. And thank you for Digital India. The Chief Minister of Maharashtra has also been most welcoming to foreign investors and is constantly collaborating his approach to ensure improvements on easing the challenges of doing business. To continue its growth trajectory and being a favored business destination for global and domestic investors, I commend the Chief Minister for organizing this summit and projecting Maharashtra as the leading state for foreign investment in India. The U.S.-India Strategic Partnership Forum was formed last year to strengthen U.S.-India relations. At the helm of affairs are business leaders who believe in India and who want to engage with the country as true partners. We hope the Prime Minister, Chief Minister, and everyone else here will leverage the U.S.-India Strategic Partnership Forum to promote India's economic objectives and building on the U.S.-India dialogue. Our goal is to grow trade and investment between our countries from $130 billion to $500 billion. The second comment comes from Emerson, a hardcore investor in India. We've had presence in India since 1980. We currently employ more than 6,600 employees, 2/3 of which are engineers. These are not labor jobs, but world-class global engineering centers that support Emerson's business. An example of this is our Innovation Center in Pune. The team works on design and development,
lab testing, 3D printing, engineering simulations, and hardcore data analytics. We have regionalized manufacturing strategy at Emerson, but it is supported by global engineering talent like our team in Pune. The way we approach our engineering is local talent combined with world-leading technology resources. Mr. Prime Minister, I agree with your comment at Davos. We cannot let the shift from globalization to regionalization lead to protectionism. Our Emerson regionalization strategy does connect us closer to our customers and allows us to support specific needs of local markets with local talent. For example, Russia for Russia, China for China, US for US. But at Emerson, we describe our strategy in India as India for the region. This is different than how we approach other world areas. We see that India has the ability to serve customers' manufacturing needs in the Middle East, in Africa, in Southeast Asia, and in India. We are positioning our facilities in India to achieve best cost for global projects. This is a unique strategy that meets our customer needs, and it also supports our manufacturing goals. We're now investing, as you know, $90 million into a new manufacturing facility in Chakan that will support manufacturing needs for the region. The Chakan Final Control Campus will be a manufacturing center of excellence. By the year 2020, the Chakan facility will employ 1,600 people in a mix of manufacturing and engineering. India allows us to serve the region from a manufacturing standpoint as well as a global engineering standpoint. Our new facility in Chakan shows our commitment to the Maharashtra region, to India, and to the development of creating a local engineering and local manufacturing workforce. It adds to our facilities in Mumbai, Pune, and Ati. With Chakan, we are not just doubling down, we are septupling down on the region. The engineering and manufacturing talent in India is what encourages us to make this investment. Again, congratulations on the accomplishments thus far, and we are excited about the continued partnership in the Maharashtra region. And a special thanks as we go through our major project to MIDC. MIDC is an outstanding, professional, energetic leadership group that makes sure investments go well, quickly, and generate outstanding returns. Thank you very much. We'd like to request the honourable speakers to please restrict the duration of their speeches to 2 minutes. We now request Mr. Ratan Tata, Tata Sons, to please address the gathering and share his thoughts with us on this occasion. Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, dignitaries, ladies and gentlemen. It's a great privilege to have been invited to be here today. And I'm here to remind people that Tata's industrial empire began in Maharashtra. In 1877, Jamsetji Tata built a textile mill in Nagpur. This was the first industrial venture that India had, and it happened here.
Maharashtra has been the home of many Tata companies, the head office, the Brains Trust, and we have been present in different parts of India in terms of manufacturing, but Maharashtra has been the vanguard of advancement in the country. Unfortunately, over the years, industrial growth in Maharashtra has exceeded the ability of Maharashtra to provide infrastructure to support this. However, under the guidance and leadership of the Prime Minister and the Chief Minister, this has now changed. And Maharashtra again is a vibrant state investing in infrastructure, high-speed trains, connectivity on the roads, air connectivity, and thanks to people like Mukesh, communication capability and connectivity. Maharashtra stands to be a state that has defined areas of excellence, be it Nagpur, Pune, Aurangabad. The state is blessed with beautiful beaches for resorts. So the future of Maharashtra, I think, is a very rosy one. It's a future that isn't going to just happen. It has happened through vision and leadership of a new government that has made its efforts known. And all I can say is Tatas would continue to invest in Maharashtra. It would continue to use its Tata Trust to uplift the living standards of its people, to assist in healthcare and the health and cancer treatment. So, as an Indian company, I would like to express my commitment personally and that of the group to work with the Maharashtra government to continue to make Maharashtra one of the foremost states in the country for industrial investment. I can only say in ending that I urge investors who are looking at places to invest to look at Maharashtra as being a primary, vibrant, to-date, contemporary, and excellent place to invest. I can say that as someone who's lived my life here and seen the leadership that is in place today. I urge people who are looking at investment to look at Maharashtra in a different way than they may have looked at before, and to support the government in providing a new India and a new Maharashtra to the country. Thank you very much. Thank you, sir. We now request Mr. Anand Mahindra, Chairman, Mahindra Group, to please address the gathering. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित अतिथिगण, ladies and gentlemen, Mahindra and Mahindra के founders श्री JC और KC महिंद्रा का जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था और उन्होंने अपना कारोबार कलकत्ते में शुरू किया, लेकिन चंद साल बाद उन्हें महाराष्ट्र का महत्व समझ में आया. They felt the pull of magnetic Maharashtra and they traveled all the way here to make it home. And their decision was rewarded with good fortune, because here in Maharashtra is where our group has prospered and it's flourished, and through the ups and downs of the last decades, we have absorbed the key qualities of the state: reinvention,
and resilience. अब जिस तरह एक मैग्नेट की दो पोल्स होते हैं, तो वैसे ही महाराष्ट्र के भी दो पोल्स हैं. एक पोल है ग्रामीण महाराष्ट्र की ताकत और दूसरा है मुंबई, this mega metropolis that we have gathered in today. मुझे मुख्यमंत्री जी के 1000 villages initiative के साथ जुड़ने में गर्व महसूस होता है, जिसने सरकार, कॉर्पोरेट्स और NGOs मिलकर महाराष्ट्र के 1000 सबसे गरीब गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं सब मिलकर. But apart from the promise of rural consumption growth, this state has a brahmastra. मुख्यमंत्री जी, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है. किसी राज्य या देश के गेटवेज उसके शहर होते हैं. They are the showcase of the ability of a country to execute on a vision of the future. Mumbai is the most exciting, commercially exciting and robust city in the country. It's a jewel in your crown. But it's a double-edged sword. If the city begins to groan under its own weight and mismanages growth, then you may just as well turn away investors and the world. I was therefore delighted to hear in your speech all the infrastructure projects and the investments you referred to. But may I request that as you have made a very clear, articulate vision for transformation of villages, tell us your dream for Mumbai. And what we can promise to you is to commit to help you to make that happen. The Mahindra Auto Division's ongoing investments in Maharashtra exceed 8,500 crores, including our manufacturing units in Nashik, Chakan and Igatpuri. Additionally, I'm proud to say we've executed an MOU with the government of Maharashtra for an investment of 500 crores under the new electric vehicle policy. Let me applaud you, Chief Minister, for being one of the pioneers in bringing electric vehicles to the country. Tech Mahindra, our IT company, is going to set up an all-green, next-generation center of excellence in Nagpur. I'm glad Nitin Bhai is here to hear that, with an investment of 125 crore rupees over the next 3 years, which will create 2,500 employment opportunities in the high-tech space. और प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं कि आप पर्यटन को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि अन्य सर्विस इंडस्ट्रीज की तुलना में पर्यटन को रोजगार पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है. Which is why I'm delighted to announce today that we are exploring the creation of a unique film-centric entertainment destination on our own land in Kandivali in Mumbai. With Mumbai as the heart of the Indian film industry and Indian cinema being an international magnet, this will, I'm sure, add immensely to the tourism in Maharashtra and create hundreds of direct and indirect jobs. We plan to spend 1,700 crores on this venture that we will dedicate to Maharashtra. And let me end by saying that I think Maharashtra is to India what America once used to be to the world. It was a place where risk-taking, hard work, and merit are rewarded in very large measure. So I have no hesitation in advising global investors who are here today and those who are watching to follow the example set by my grandfather and granduncle and make the journey, the yatra, to Maharashtra. Thank you. Thank you, sir. We now request Mr. Baba Kalyani, Chairman Bharat Forge Limited, to please address this gathering. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Vidyasagar Rao ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Ministers from the Central Cabinet, Ministers from the State Cabinet, my colleagues from the industry, ladies and gentlemen. After hearing all the stalwarts from the industry, somebody like me has very little to say. But I will still say it. My father came from a small village
in the western part of Maharashtra in 1964 to Pune. I spent my childhood in a little village where I had no electricity, no schools, and from a farmer, he became an entrepreneur. This is the magic of the Mati of Maharashtra. Today, Maharashtra has made us, in our business, the largest company on this planet. We are the first multinational in manufacturing, and this is all because of Maharashtra. As I stand here, the Honorable Prime Minister's vision of Make in India, especially in the area of defense and high-tech manufacturing. We have set up 2 plants to manufacture very high-technology defense products in this state. We are setting up 2 more plants right now in the Khed area of Pune, which are going to export products for electric and hybrid vehicles to the rest of the world. And I'm very happy that your vision to take India to the next level in the digital revolution is actually going to make India and Indian manufacturers much more competitive in the rest of the world, providing huge opportunities. So I thank Maharashtra, I thank its people, and I thank what makes Maharashtra entrepreneurs like us succeed. Thank you. Thank you, sir. We now request Mr. Hyun Jun Cho, Chief Executive Officer Hyosung, to please share his thoughts with us on this occasion, to please address this gathering. Namaste, India. Namaste, Maharashtra. Honorable Prime Minister Modi ji, Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, and distinguished guests. It is my great pleasure to be here with you. My name is Hyunjun Cho, Chairman of Hyosung Group, a Korean-based entity. India and Korea are geographically distant, but our relation is akin to that of friendly neighbors. As one of the 4 grand civilizations, India has had a profound religious influence in Korea and our people. Further, I was reminded of India and Korea's royal bond of 2,000 years. This bond was created when in 48 AD, the Indian princess from Ayodhya, Sri Ratna, bravely made the sea passage to Korea and eventually married a Korean king of Kaya province. Coincidentally, it is in Haman, a region within Kaya, where 1,000 years ago, the Cho family, my family, settled down and has led the lives ever since. It is a true honor for me to be here in Mumbai. As all of you, I hope this event will provide a platform for deep cooperation and mutual success. Today, India is a country that boasts one of the highest economic growth rates and stands tall as the vanguard of the technology industry. It is no exaggeration to say that India will be the most powerful global economic engines in the future. In particular, the Make in India policy
set forth by Prime Minister Modi lay down the building blocks for a culture of innovation in India. The repealing of outdated laws, tax reforms, creation of online citizen engagement platform, and an environment friendly for foreign companies, among other policies, have led my company, Hyosung, like many other companies, to work hard to find a place in Indian economy. As a result, India has the highest increase in foreign direct investment. No question, these efforts are also benefiting from India's favorable demographics and the vibrant energy of the people. The future is built upon the present, and you must be the change you want to see in the world. Are a few of the words of wisdom left behind by my personal hero, Mahatma Gandhi, and are quotes that I believe best reflect what India is today. 10 years have already elapsed since Hyosung Group first started its operation in New Delhi in 2007. With the government's full support, Hyosung's #1 brand, Spandex, was the first business to benefit from its presence in India, and the electric grid produced by our heavy electric plant in Pune is helping link India's vast electrical grid. Distinguished guests, as India launches herself to new heights of the international stage, Hyosung also aspires to be an important contributor to that journey. We are absolutely committed to India's grand mission and hope that we will live up to our expectations. I would like to congratulate the opening of Magnetic Maharashtra 2018 and to send my warmest regards on this special occasion to Prime Minister Modi and Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. We now request Mr. Jin Ho Bang, Chairman and Managing Director, POSCO, to please share his thoughts with us on this occasion. Please address the gathering. Good evening, ladies and gentlemen. I am Jin Ho Bang, Managing Director of POSCO Maharashtra Steel. It is a great honor to attend here for Magnetic Maharashtra. Firstly, I would like to take a moment to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for making better business environment in India to our company. Since Honorable Prime Minister started war, India has achieved remarkable economic growth. This year, 2018, will show highest growth rate among the world. Due to the fast economic growth, steel demand in India has increased tremendously, which accelerates the improvement of Indian steel company as well as our company. Under Prime Minister's dynamic leadership, India has changed innovatively. Actually, I have been working in India around 13 years, so that I know India a little bit, but I doubt whether innovative scheme
like GST and demonetization actualized successfully or not. But I was very surprised to execute it without any hesitation by Indian government, and also very impressed to know that all has succeeded. I'm also very much thankful to Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis for all his support and cooperation in the successful operation of our company in the state of the Maharashtra. Under his leadership, the state Maharashtra has earned the reputation of preferred destination of foreign investment in India. On this occasion, I would like to introduce POSCO Maharashtra briefly. POSCO Maharashtra, located at Raigarh district in the state of the Maharashtra, which is away 200 kilometers from Mumbai. We, POSCO Maharashtra, have made investment of more than 8,000 crore. We are now creating employment more than 2,000 people in Mangaon area. We are now producing high-grade steel around 2 million tonnage per year for auto and appliance electrical industry. As we start operate, the import of high-quality steel has been replaced by us. Apart from the establishing our business, POSCO Maharashtra is doing many kinds of the corporate social responsibility, like free medical camp, scholarship, sports, and cultural activity. We are very happy to play a role in contribution and the development of the local community where we operate. Lastly, we are looking forward for further investment in the state of the Maharashtra for expansion of our business. We need support and cooperation of the Indian government. I again thank for all support of the Indian government and hope for long and mutual prosperous relationship. Thanks a lot. Dhanyawad. Thank you, sir. We now request Mr. Jan Vida Strong, Chairman Saab India, to please address the gathering. Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, Cabinet Ministers, dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, friends. It is a true honor for me to stand here in front of this gathering, in this important event, in a very important part of India. I would like to start, though, with issuing a small warning. During this event, please watch up and keep a close look at your mobile, at your wallet, with all your credit cards, with your hotel keys, and other things. And why? We all know what happens when magnetism comes together with this stuff. And for sure, this is and it is going to be a magnetic place to be. In a magnetic state, in a magnetic country, with a truly magnetic leadership. We were here 2 years ago
and at that time, the headline was Make in India. I've spent a substantial part of my life in India, nothing compared to some of the previous speakers. However, I can stand here and say that I truly believe that India is on the right track. And I think Maharashtra is running on the right track. I also believe in Make in India. But I would like, from our perspective, to tweak it a bit. I would like to call it Develop and Make in India. Because we all know that to create a sustainable industrial ecosystem, development, R&D, innovation, that's the key. So call it Develop and Make in India. That will make a difference, I hope. Production is extremely important, and we talk a lot about production. But especially those of us who work with complex and advanced systems, we know that the production is just the finish line in the marathon. Prior to that, there has been years and thousands of hours of development and hard work put into it. And having such a great gathering of fantastic companies like the Tatas, Mahindras, Bharat Forge, etc. When Mr. Mahindra gets his order of the car, that's the final price. And before that, a lot of hours has gone into innovative, creative development. So why I'm saying this is that I think it's extremely important for India and other places to make sure that we also induct this R&D culture into the MSMEs. We have great companies here that doesn't lack R&D capabilities, but we need to get that down to the micro, small and medium-sized businesses to create that sustainability that we all are striving towards. And that is also why we from Saab and Team Sweden are focusing a lot on the R&D side, but also R&D towards the MSMEs. And Maharashtra is really, Sweden is a small country, Sweden is a small place, but I'm very proud to say that in India, and particularly in Maharashtra, we're not that small. Pune is one of our, we call it sort of our second hometown, with a long row of Swedish companies and a long history. Sweden is actually employing directly or indirectly more than 1.3 million people. Out of many of those is here in Maharashtra. And we want to grow that a lot. That's why we are offering India not just to produce our latest technology. We would like to pick the brains of the 1.3 billion Indians to help us in developing our next generation technologies. Thank you so much. Thank you, sir. हम गणमान्य अतिथियों को आज हमें संबोधित करने के लिए धन्यवाद करते हैं. I request all guests to please put on their headphones for the translation of the Honorable Prime Minister's speech. Magnetic Maharashtra Convergence 2018 Global Investors Summit के मंच से हमारी आपसे विनम्र अनुनय है
माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया आज की शाम हमारा दिशा निर्देशन करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान श्री विद्यासागर राव जी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, देश विदेश से आए उद्यमीगण और अन्य महानुभाव, मैग्नेटिक महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। समर्थ आणि संपन्न महाराष्ट्राच्या निर्मितीकरता होणारा मॅग्नेटिक महाराष्ट्राला माझा खूप खूप शुभेच्छा। बंधू भगिनींनो, सर्वांना माझा नमस्कार। मुझे साइंस की बारीकियों का तो बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही इंक्लूजन होता है। यहां आने से पहले मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट और जेएनपीटी के कार्यक्रमों में था। आज के ये दो कार्यक्रम महाराष्ट्र की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की उसमें झलक है। वैसे ये भी एक फैक्ट है कि आप जितना ज्यादा सेंटर के पास होते हैं, मैग्नेटिक लाइन की ताकत भी उतनी महसूस होती है। आज यहां इस आयोजन में आपका ये उत्साह, आपका ये जोश, ये पूरा चेंज एटमॉस्फेयर इस बात का सबूत है कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र की मैग्नेटिक लाइंस कितनी शक्तिशाली है। साथियों, आयोजन कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। आज देश के सभी राज्यों में आपस में एक कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोलर एनर्जी, ऐसे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के इवेंट्स का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। राज्य अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से किस क्षेत्र में कहां निवेश होना है, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में मुझे असम में एडवांटेज आसाम इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में निवेश को लेकर इतनी अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, अनेक राज्यों के इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। गुजरात से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका प्रभाव आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। साथियों, मैं महाराष्ट्र सरकार को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले 3 साल में महाराष्ट्र सरकार ने इन्वेस्टमेंट का माहौल मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की निरंतर कोशिशों ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड बदलाव लाने में बहुत बड़ी मदद की। फडणवीस सरकार के रिफॉर्म्स ने महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 में से 9 पैरामीटर्स
जैसे ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होना अपने आप में बहुत बड़ा नोटिसेबल फैक्टर है। इतने व्यापक स्तर पर बदलाव तब आते हैं जब पॉलिसी रिफॉर्म के माध्यम से गवर्नेंस में एक नया वर्क कल्चर विकसित किया जाता है। जब परियोजना के सामने आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए प्रक्रियाओं की डीबॉटलनेकिंग की जाती है, जब इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन बढ़ाया जाता है, जब टाइम लिमिट में फैसले लिए जाते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड की मैं पहले बात कर रहा था वो ऐसे ही क्रिएट होती है, इसका प्रभाव निवेश पर नजर आता है, राज्य के विकास में नजर आता है। और यही वजह है कि पिछले साल महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टोटल एक्सपेंडिचर में देश के हर राज्य में आगे था। फर्स्ट एंड सुलेवंस की रैंकिंग में महाराष्ट्र को ओवरऑल डेवलपमेंट में देश का नंबर 1 राज्य बताया गया। वर्ष 2016-17 में देश में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उसका करीब 51% महाराष्ट्र में निवेश किया गया है। इसी तरह जब यहां फरवरी 2016 में मेक इन इंडिया वीक मनाया गया तो इंडस्ट्री सेगमेंट में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इनमें से 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के 100 मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट में से एक गिना गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उससे आने वाला है। इसके अलावा मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर में तैयार होने वाले करीब 350 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भी यहां पर विकास और निवेश दोनों की नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, एक विशेष प्रोजेक्ट जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है महाराष्ट्र समृद्धि कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को, यहां के एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रोबेज इंडस्ट्रीज को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। महाराष्ट्र में 700 किलोमीटर लंबे सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे का निर्माण, एक्सप्रेसवे के किनारे स्मार्ट सिटी की तरह 24 नए नोड्स का विकास, राज्य के कम से कम 20 से 25 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर इसके अंदर निहित है। मुझे खुशी है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को देश का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होता है और मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी और ये राज्य देश का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनेगा। साथियों, मैं मानता हूं कि देश का विकास तभी संभव है जब राज्यों का भी विकास हो। महाराष्ट्र का विकास भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक है कि हम इस तरह के बड़े लक्ष्य
तय कर पा रहे हैं। ये देश में बदली हुई सोच, बदले हुए हालात का जीता जागता उदाहरण है। मुझे याद है कुछ साल पहले जब भारत पहली बार $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक क्लब में आया था तो कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी थी। लेकिन इसके बाद के कुछ वर्ष घोटालों की भेंट चढ़ गए। देश में तब एक अलग ही तरह का वातावरण बन गया था। तब $1 ट्रिलियन क्लब की नहीं, फ्रेजाइल 5 की बात हुआ करती थी। पिछले 3-3.5 वर्षों की सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि अब $5 ट्रिलियन क्लब की बात होने लगी है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएगा। साथियों, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने का एक विजन है, उसके पीछे प्रयास है। छोटे छोटे इश्यूज को पकड़कर छोटी छोटी चुनौतियों को समझते हुए हम समस्याओं को सुलझा रहे हैं। गवर्नेंस को हम उस स्तर पर ले गए हैं जिसमें सरकार का दखल कम से कम हो। साथियों, देश प्रगति तब करता है जब होलिस्टिक विजन हो, जब विजन इंक्लूसिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो। आज हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं जहां स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस ड्रिवन है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव है। हम न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश में एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं जो सरकारी तंत्र पर कम से कम आश्रित हो। इसके लिए नियमों को आसान बनाया जा रहा है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है। जहां कानून बदलने की आवश्यकता है वहां कानून बदले जा रहे हैं, जहां कानून समाप्त करने की आवश्यकता है वहां कानून समाप्त किए जा रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप में से कुछ जरूर ये जानकारी होगी कि पिछले 3 वर्ष में भारत सरकार ने 1400 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए हैं। जो नए कानून बनाए भी जा रहे हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वो चीजें और कॉम्प्लिकेट ना करें, बाकी वो सिंप्लीफाई करें। सरकारी प्रक्रियाओं के साथ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस जितना कम हो सकता है वो हम कर रहे हैं। चाहे लेबर लॉज की बात हो, टैक्स कॉम्प्लायंस की बात हो, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारे प्रोसेस इजी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, वी बिलीव पोटेंशियल प्लस पॉलिसी प्लस प्लानिंग प्लस परफॉर्मेंस लीड्स टू प्रोग्रेस। इसी सोच का नतीजा है कि आज नेशनल हाईवेज बनाने की स्पीड, नई रेल लाइनों के निर्माण की स्पीड, रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड, सरकार द्वारा घर बनाने की स्पीड, पोर्ट्स पर माल ढुलाई की स्पीड, सोलर पावर में कैपेसिटी एडिशन की स्पीड पहले के मुकाबले, मैं और भी 50 चीजें बता सकता हूं, पहले के मुकाबले ये 2 गुना 3 गुना हो चुकी है। साथियों, हमने एक और
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सुनिश्चित किया है। दूसरी ओर रिसोर्स आधारित डेवलपमेंट पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट पॉलिसीज आधारित बजट पर हम जोर दे रहे हैं। पिछले 3-4 साल में हमारी सरकार ने जो बजट में रिफॉर्म किया है, बजट से जुड़ी जिस सोच को बदला है, वो पूरे देश में एक नया वर्क कल्चर ही नहीं डेवलप कर रहा, बल्कि सामाजिक आर्थिक जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। रेल बजट अब बजट का हिस्सा बन गया है। बजट में पहले प्लान नॉन प्लान की जो आर्टिफिशियल दीवार थी, वो हमने खत्म कर दी है। बजट का समय भी बदलकर अब 1 महीना पहले हो गया है। इन सारे फैसलों की वजह से अब बजट में आवंटित राशि विभागों के पास समय से पहले पहुंच जाती है। योजनाओं पर काम करने के लिए विभागों को अब ज्यादा समय मिल रहा है। मॉनसून की वजह से काम की जो गति धीमी हो जाती थी, उसका प्रभाव भी काफी हद तक अब खत्म हो गया है। सरकार ने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन किए हैं, उसका लाभ देश के किसानों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों और समाज के वंचित तबकों को उनके तक पहुंचे। ये साल दर साल हमारे हर बजट द्वारा सुनिश्चित किया गया है, पुनः स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, our budget is not limited to outlay. Our budget is not limited to only output. Focus of our budget is on outcomes. हम 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, 2019 के अंत तक पावर फॉर ऑल, इन सारे क्षेत्रों पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। इस वर्ष बजट में क्लीन फ्यूल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इन 2 कंसेप्ट पर काम और तेज किया गया है। हमने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया है। भारत में टोटल परिवारों की संख्या करीब 25 करोड़ है, उसमें से 8 करोड़ परिवार। ये सिर्फ कुछ योजनाएं भर नहीं है, बल्कि दिखाती हैं कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक कल्याण, उसके सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये फिलॉसफी हमारे बजट में एक आधारभूत मान्यता के रूप में आप अनुभव करते होंगे। जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे अनेक अनगिनत योजनाएं देश के गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग को, मध्यम वर्ग को, नौजवानों को, महिलाओं को सशक्त कर रही है। साथियों, हमने हेल्थ केयर से जुड़े जिस बड़े इनिशिएटिव का ऐलान किया है, वो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग के यहाँ उनका मैनेजमेंट यहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनियों में किस सैलरी स्लैब तक उस व्यक्ति को पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। आमतौर पर 60,000, 70,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की कमाई वाले व्यक्ति को इस ब्रैकेट में स्थान मिलता है। अब ये सरकार ऐसी है कि जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत साल भर में एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को देने का निर्णय किया।
और करीब करीब 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये योजना गंभीर बीमारियों की वजह से लोगों को गंभीर आर्थिक संकट की दोहरी मार से भी बचाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हमने देश की बड़ी पंचायतों में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स खोलने का भी तय किया। आप सोच सकते हैं कि ये फैसले देश के हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह बदल डालेंगे। ये योजना देश में एफोर्डेबल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, नए डॉक्टर्स, नए पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर से जुड़े हर सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके तहत हमारी सरकार अगले 4 साल में देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना खर्च करने की बना करके आगे बढ़ रही है। इसी तरह देश के नौजवानों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हम मुद्रा योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक लगभग 10.5 करोड़ लोग हमारे यहाँ स्वीकृत किए गए हैं। लोगों को बिना गारंटी अब तक 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। इस वर्ष के बजट में भी हमने 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन देना इसका निर्णय किया। ऐसे अलग अलग मिशन देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ईज ऑफ लिविंग जितनी बढ़ेगी उतने ही लोग एम्पावर भी होंगे। जितना लोग एम्पावर होंगे उतना ही हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा। जैसे मैं देश के रूरल सेक्टर की बात करूं तो इस साल के बजट में हमने एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना तय किया है। ये राशि फार्मिंग एक्टिविटीज पर तो खर्च होगी ही, इससे गांव में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनेगी, 51 लाख नए घर बनेंगे, लगभग 2 करोड़ नए टॉयलेट बनाएंगे, 1.25 करोड़ गरीब घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ये सारे प्रयास एग्रीकल्चर ग्रोथ तो बढ़ाएंगे ही, रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की लाखों संभावनाएं भी पैदा करेंगे। इस साल हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का बजट भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। नए पुल, नई सड़कें, नई मेट्रो, नए एयरपोर्ट, मुंबई जैसे मैक्सिमम सिटी की मैक्सिमम एस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं और खासकर देश के मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को एड्रेस करते हैं। साथियों, आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में डिसरप्शंस और डिसकंटेंट के दौर में हम वर्तमान के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे का रास्ता बनाना होगा और हम सबको मिलकर के करना होगा। जब हम सभी देश की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करेंगे, देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए काम करेंगे, तभी न्यू इंडिया के अपने संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे। तभी भारत के विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ हम न्याय कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के करोड़ों को नागरिक अपने अपने संकल्प को पूरा करेंगे और समय रहते पूरा करेंगे। आखिर में मैं मैग्नेटिक महाराष्ट्र के कैरिस्मेटिक जनता जनार्दन को, यहाँ के परिश्रमी लोगों को, उद्यमियों को उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार इस समारोह को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं
कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ जुड़ करके राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन का भला होगा तो दुनिया का कितना भला होगा, जितना अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, भावनाओं और संवेदनाओं से भरे हुए आपके संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने इस समारोह में सम्मिलित होकर हमारा उत्साहवर्धन किया। आज के उद्घाटन समारोह को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद और आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आप लोग कृपया अपने ही स्थान पे रहें। कृपया कुछ देर आप लोग अपने ही स्थान पे रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आप लोग कृपया अपने ही स्थान पे रहें। अब से थोड़ी ही देर में आज शाम के कल्चरल सेलिब्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी, जिसमें शामिल होंगे म्यूजिक कंपोजर डुओ अजय अतुल, कॉमेडी किंग सुनील ग्रोवर, सोनाली कुलकर्णी, अमृता खानविलकर, सुपर सिंगर आकृति कक्कड़ एंड द वन एंड द ओनली रणवीर सिंह। मैं गीतिका गंजूधर अब आप सभी को धन्यवाद करते हुए आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।